Sairam to all of you. Sairam to Sairam all sir. of you. सायरम सर। सारे लोग ठीक हैं? ऑल राइट। अब मुझे ये बताओ, अभी तक अपना आज नया चैप्टर शुरू होना है या पुराना ही क्या करना है? अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया था वो, आदित्य? कंप्लीट हो गया था? Yes sir. चलो ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज व्हाट? यार इसमें तो गर्मी लग कल की टी शर्ट में गर्मी लग रही है, दूसरी टी शर्ट दो। Children and women in sports. Children and women in sports. ठीक है आदित्य। हाउ मेनी पीपल? ओनली 6 people, 7 people have joined yet. Okay, so before starting the class, shall I give the assignment? Tell me. यस सर। Or you people want that I should continue? What do you want? सर असाइनमेंट दे दो पहले। चलो पार्थ ने बोला, बाकी की आवाज भी तो आए। Sir, continue. मैं पढ़ाऊं या आप लोग अपने अपने छोटे छोटे प्रेजेंटेशन बनाओगे? राइट इट इन द चैट बॉक्स। एवरीबडी राइट इट इन द चैट बॉक्स। आदित्य ने बोला है कंटिन्यू। अच्छा, आदित्य खिची ने बोला है कि मैं पढ़ाऊं। कार्तिक विजय ने बोला है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब नहीं समझा मैं। क्लियर लिखो, आई टीच और यू। ओके राइट। So you don't want to make the PPT, you just want one-way communication so that you can just shut down your windows and you can move on. Right, no problem.
फिर मैं असेसमेंट कैसे करूंगा ये बताओ मुझे, कि आप लोग क्या कर रहे हैं। मैं आपको अगर असेसमेंट वगैरह मुझे करना हो किसी चीज़ पे, तो वो असेसमेंट के पैरामीटर भी बता दो। चलिए, ऑलराइट सिद्धार्थ, प्रेयर प्रेयर भी मैं ही करूँ या आप करेंगे बेटा? सर मैं नहीं कोई बात नहीं, बोल दो, मैं आई एम रेडी टू डू दैट। नो सर। बताओ क्या करना है। चलो स्टार्ट प्रेयर, क्लोज यस योर सर। आइज, जॉइन योर हैंड्स एंड स्टार्ट। तेरे वंदन से करते हैं दिन की शुरुआत, सत्यम वद धर्मम चर जीवन आधार। तेरे वंदन से करते हैं दिन की शुरुआत, सत्यम वद धर्मम चर जीवन आधार। ए मालिक विनय है तुमसे, तुम रहना हरदम साथ, सत्यम वद धर्मम चर जीवन आधार। विद्या के इस मंदिर में सच्चा विद्याधन पाए, दिनकर से भी उज्जवल अपना चरित्र हम बनाए। ए मालिक विनय है तुमसे, तुम रहना हरदम साथ, सत्यम वद धर्मम चर जीवन आधार, सत्यम वद धर्मम चर जीवन आधार। थैंक यू। ऑलराइट, नमन ने असाइनमेंट का बोला है, पार्थ ने असाइनमेंट का बोला है, और नीति ने असाइनमेंट का बोला है। तो नमन लास्ट टाइम प्रेजेंट किया था, नमन बेटे? नमन लास्ट टाइम प्रेजेंट किया था आपने? ओके। नीति बेटा तबीयत कैसी है अब आपकी? नीति बेटा आपकी तबीयत कैसी है अब? अभी ठीक है बेटा, फीवर वगैरह? हेलो बेटे की तबीयत ठीक है अभी? यस सर। चलो गुड। पार्थ ने असाइनमेंट का बोला है। पार्थ, आप असाइनमेंट लिख लो बेटा अपना। यस सर। मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, मॉडर्न डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। यस सर। फर्स्ट ए, 1.A। यस सर। ठीक है बेटा। यस और नेति बेटा आप लिखो फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। नेति ने नोट किया? यस सर। फैक्टर अफेक्टिंग motor development, this is yours. Naman, are you interested to do? Naman, are you listening me? यस सर। यस सर। Okay, so write your assignment. Exercise children at different stage of growth and development. Have you noted down? सर कैन यू रिपीट? Exercise guidelines at different stage of growth and development. ओके ओके सर। ठीक है। सर ये
ये आपका जाएगा थोड़ा, ये जाएगा आपका बेबीहुड, आफ्टर दैट infancy growth, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। आराम से बनाना, सबसे लास्ट में आपको दिया है मैंने, और टाइम से क्लास में आना जिससे कि प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो। सर एक बार और सर फर्स्ट वाला टॉपिक बता दो सर। मोटर डेवलपमेंट, पार्थ कावरा, मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस। ये सर ये पूरा मीनिंग ऑफ वगैरह ना सर? यस यस, एवरीथिंग। ऑल राइट। सर हाँ बोलो, सर पोस्चर कर सकता हूँ क्या? क्या बोल रहे हो? सर जो नेक्स्ट टॉपिक है सर, जो पोस्चर, सर वो मैं कर सकता हूँ सर? जब वो आएगा तब की तब बताऊंगा बेटा। यस सर। पॉस्चर आपको करना है? यस सर। ठीक है, तो पॉस्चर आप लिख लो अपना। यस सर। पॉस्चर में एडवांटेज और करेक्टिव पॉस्चर्स, ये सारे यस सर। कॉजेज ऑफ बैड पॉस्चर। यस सर। ठीक है, 3C तक आप लेंगे। यस सर। और छुट्टी लेट कोई नहीं होगा, क्लास में टाइम से आएंगे सारे लोग। ऑल राइट, so today we are introducing the topic called physical education, children and women in sports, right? Growth and development is important of each and everyone's life. In children, physical activities plays an important role for optimum growth and development. Are you able to hear me properly? यस सर। Okay, fine. हाँ बेटू बोलो। हाँ, कोई बोल रहा था कुछ? So the role of the physical education or physical activities in the children's life is very important. It plays an important role for the optimum development of growth and development. So motor development activities help to attain full growth and development. If the child will play, what happens? He get that opportunity where he not only get the proper growth of the body, but at the same time he also acquired the proper development of his personality. The scope of having the all-round development of the child can be ensured with the help of physical activities. Either it is physical development, or it is mental development, or it is social development, or it is spiritual development. So all kind of the aspects of the life can be developed with the help of these activities. Good posture plays an important role in our development. Many times our growth and development gets hindered by our postural deformities. कई बार हमारी जो postural deformities हमें develop हो जाती है if we are not playing regularly, if the child is not getting the proper opportunity to participate in this physical activities like knock knee, flat foot, bow leg, scoliosis, lordosis, different kind of the deformities in the body can be developed, which can be corrected by the physical activities also. This activity, deformities can also be corrected with the help of physical activities. Women are equally important in the society and have been taking active part in its social activities. Today,
battle for equality between men's and women's sports rises on. So women's sports includes participation of women in professional and amateur competitions. Female participation in sports rose dramatically in 20th century. Nowadays, what is happening? The women's also becoming very competitive as the men's are. And in this 20th century, the participation of the women has increased dramatically, especially in the last quarter, or reflecting changes in the modern society that emphasizes gender differences. Right? तो अब क्या है, हमारी मॉडर्न सोसाइटी में आज वुमेन्स काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और पार्टिसिपेट करने के कारण क्या हो रहा है, ये लास्ट क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी अगर देखा जाए तो बहुत तेजी से वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा है. The level of participation and the performance varies from country to country, culture to culture, and game to game. The women's performance participating in the games and sports of physical activities is varies because of why? Country to country. What kind of the socio-economic culture is there in the society of that particular nation? Participation of women are basically depend on that. If you have seen it in the Olympics, when the women from Iran or Iraq or Saudi Arabia, when they come to participate in this program, they always used to wear the hijab, right? And they used to wear full clothes in the body. Where in the Western countries, the girls prefer different kind of uniform for participating in sports. Or game to game is also dependent performance. In what kind of the games and sports these girls are participating, right? Today in the modern society has accepted the women's participation in sports competition, and it has risen to a great extent as compared in the past. If we will go in the history of the Olympic, where earlier the women were not allowed to participate, but gradually the women also started participating in Olympic games, and at the same time, today if you will see, the women are participating in such a games which was not basically considered to be fit for the women, but nowadays they are participating and competing. Now women undergo many psychological, physiological and social changes which have to be accepted in a positive way. Now women are having the different kind of the challenges, either it is physiological changes or challenges, either it is psychological challenges or social challenges, and which have to be accepted in the positive way. कई जगहों पे कई सोसाइटी में लड़कियों का खेलना अच्छा नहीं माना जाता, but still the women came front and they have started participating in that. आप एग्जांपल देख सकते हो दंगल का, जिसमें कि पूरा गांव अगेंस्ट हो गया था, but still their father has supported to these girls and they have become the world champion. Likewise, so women who in the intensive sports activities or training are likely to face many problems like female athletic traits. अब ये तो मैंने सोशियोलॉजिकल अभी चैलेंज बताया था आपको. फिजियोलॉजिकली दे यूज्ड टू हैव द डिफरेंट चैलेंजेस. Psychologically they have to face the society. So that way the women are coming up after fighting all the odds in the society, and they are regularly participating in these activities. The women also have many problems like female traits, athletic traits. They are also facing different kind of the physiological challenges. So they also have to come over that challenges. So these problems we are going to discuss in this chapter. This chapter have to understand these physiological, psychological and social aspects of the women's sports. So I have given the general introduction about this chapter. In this, we are going to discuss why the physical activities are important for the children to have the proper growth and development,
and at the same time, how the women are facing the challenges till today with psychological aspect, physiological aspects, and social aspects. Right? Now I'm sharing my screen with you, and I will try to cover some important contents with you. Right? This is physical education, class notes, chapter 5, children and sports. Now, the first thing which is very important in the proper growth and development of the child, that is called motor development. Motor development only happens when the child is biologically and mentally ready for it. How that motor development can be ensured until unless the child is ready biologically, bodily, physically, and mentally for it to participate in that physical activities. If the child is not ready to participate any kind of the program or any kind of the development program cannot be get succeeded. As I can give a very suitable and very easy example of the today. I have asked that how many people are ready to take the assignments. Only 3 people or 4 people have suggested their name. Now what happens? Now see, these 4 will always have the advantage other than those who have refused or kept silent. The reason is when they are going to prepare the PPT or PowerPoint presentation, they have to explore the contents. When they are going to explore the contents, they will come forth to different kind of the literature, different kind of the points, and then they will select these points and they will put into the slide. And before presenting in this class, they are going to read that slide. And when they read that slide, about 60 to 80% things they understand before discussing on this platform. And 20% or 10% which will be left out, it will be clear in the discussion when we are going to have the discussion over this platform. So once when they are ready to participate, once they have volunteered to themselves, this activity cannot be succeeded. Now what the advantage they are having? They have get introduction how to use these tools which we are using in the present scenario. 2, they will have the curiosity kind of the approach. They will try to find out. So the curiosity or creativity remain alive in these children. They explore the things. And when you explore something, you never forget. जब आप कोई चीज बनाते हैं, जब कोई आप चीज को जानने करने की समझने की कोशिश करते हैं और जब आप उनको समझ जाते हैं, कर लेते हैं, तो फिर उसको आप कभी भी लाइफ में भूलते नहीं है. That is the advantage. The next advantage is they learn how to speak on the public forum. So that hesitation to speak in front of the all, that goes away. So they develop that confidence. They also develop the skills of public speaking. So there are different multi-dimensional advantages comes when you prepare a 2-3 slides and present your topic in a shortest form. So that is the advantage. So why I'm giving this? Because you people should understand, you are in the 12th class. One-way communication is not good for you and for me. There should be always be a point where we should discuss, and discussion required your participation. If you will not going to participate, then it's very hard to understand that whatever I am speaking, whatever I am just informing to you, either it is understood by you or not. So just keep it in the mind. We all have to change the approach. If we will change the approach, if we will go on the different kind of the approach, we all will grow. That has to be understood, right? So motor development of the child can only be happens when the child is biologically and mentally ready for it. So motor development refers to the development of movement and various motor abilities
from birth till death. When the child participate in different kind of the activities, physical activities or games or in the sports, what happens? They learn various kind of the movements. And when they learn the movements, they also understand at the same time that what are the best abilities I am having. And they learn from birth to till death. As I used to speak in the class, that when we born, what happens? We used to move our limbs, our hands or leg movements. Then gradually we grow. Then we just what happens कि हमको लिटा दिया जाता था तकिए लगा के दाएं बाएं उसके बावजूद हम पलट जाते थे. One type of the movement. Then gradually we have stand up. Gradually we have started walking. We have developed the command and coordination over the limbs of the body, and then we start walking. After walking, we started running, then catching, jumping, throwing. This all movements we learn with the help of physical activities, and this physical activities creates or make our movements more efficient, and that is help how we develop that because of motor development. If we are having the proper kind of the motor development, then we have the command over these movements. Now, motor development is the ability to move around and manipulate his or her environment. Now, what is the ability to move around? So whatever the movement you are doing, you become more conscious about your environment, in which area, in which circumstances, in what kind of the conditions, what kind of the movements are suitable for. कार्तिक भैया हाँ, कितनी देर हो गई बेटा मुझे बाहर हुए? सर अभी हुए 2 मिनट पहले. ओके, राइट. मुझे बताना मैं कहाँ तक पहुँच गया था.
ऑलराइट, मैं कहां तक था? देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन द चिल्ड्रन, राइट? हेलो, यस सर। हाँ, थोड़ा सा आवाज को बेटा बता देना ना है। So there are 4 stages of motor development in the children. Number 1, infant, 0 to 2 years. Early childhood, 2 to 6 years. Middle age or middle childhood, 7 to 12 years. And later childhood, 12 and later. The first stage is marked by extremely rapid growth and development. As in the second stage, by the age of 2 years, this development has begun to level out somewhat. The final stage does not have any marked new development. Rather, it is characterized by the mastering and development of the skill achieved in the first 2 stages. Before the stage of childhood, there is a range of infants that is from 0 to 2 years. ये जो फर्स्ट 2 years की स्टेज है उसमें हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत रैपिड होती है एज इन द सेकंड स्टेज. बट द एज ऑफ 2 years, by the age of 2 years, this development has begun to level out somewhat. धीरे धीरे क्या होता है, ये लेवल आउट होने लगती है. एक स्पीड से हम धीरे धीरे बढ़ते हैं. द फाइनल स्टेज डज नॉट हैव एनी मार्क्ड न्यू डेवलपमेंट. जो लेटर चाइल्डहुड स्टेज है उसमें एक बार बच्चा पहुंच जाता है तो फिर वो उतना ज्यादा तेजी से ग्रोथ नहीं करता है. रादर इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मास्टरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स. तो फोर्थ स्टेज में जो भी हम लोग मूवमेंट सीखते हैं वो मूवमेंट में हम लोग मास्टरी करते हैं फिर इस फाइनल स्टेज में. एंड इन दिस 2 stages, before the stage of childhood, there is the age of infancy and that is from 0 to 2. तो पहली 2 स्टेजेस में हम बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं और बहुत तेजी से सारी चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं और फिर यहाँ पे हम उन चीजों को मास्टरी करते हैं. ठीक है. टाइप ऑफ मोटर डेवलपमेंट. So there are 2 types of the motor development which I have already informed you in the 11th class. Number 1, gross motor development, and number 2, fine motor movements. What is gross development movement or development? Gross motor development is development uses the larger muscles of the skeleton or group of large muscles to maintain posture and balance for activity such as throwing, walking, running और hopping. तो ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स में क्या होता है, जहां पे हमारी स्केलेटल मसल्स और ग्रुप ऑफ लार्ज मसल्स ग्रुप हमारी बॉडी को पॉस्चर को मेंटेन करते हैं, वो ट्रेंड होती है, उनके मूवमेंट्स को हम सीखते हैं. एंड वी ऑल्सो दिस ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स ऑल्सो हेल्प्स in the balancing of the activities. What kind of the activities? Throwing the ball. There are so many muscles are involved in throwing the ball. Walking, running, hopping. तो ये जो large muscles group activities में जो हमारी mastery होती है, that comes under the gross motor development, where our muscles get mastery over these all movements. So that is called gross motor movement. Now what is fine motor movements? This development uses the smaller muscles of the hand, feet, and face for more precise activities such as eating, speaking, playing with the toys, and eventually writing. तो आपने देखा होगा कि ये जो फाइन मोटर मूवमेंट्स और ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स जब आप एलकेजी यूकेजी में पढ़ते थे तो आपको याद आएंगे कि आपकी जितने भी क्लास की एक्टिविटीज होती थी, चाहे वो आप वो जो फ्रेम में कांच बटन लगे रहते थे या हुक लगे रहते थे या लेस बांधना सीखते थे या वो चने पीटना सीखते थे या चंदन को घिसना सीखते थे या पेंसिल पकड़ के अल्फाबेट लिखने की कोशिश करते थे, स्लैंटिंग लाइन खींचने की कोशिश करते थे, वो सारी की सारी चीजें क्या आती थी आपकी, ये फाइन मोटर मूवमेंट्स. और ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स में
रनिंग, जंपिंग, जब आप बड़े हो जाते हैं थोड़े से, उसके बाद में फिर इन चीजों को सीखना शुरू करते हैं, मास्टरी करते हैं. सो टाइप ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज टू टाइप्स. वन इज ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड सेकंड इज फाइन मोटर डेवलपमेंट. राइट. नाउ फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, ये जो नीति को दिया है मैंने टॉपिक, एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, दे विल मेक इट इन द डिटेल. फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस मोटर डेवलपमेंट. द डेवलपमेंट एंड क्वालिटी ऑफ अ चाइल्ड motor skills are influenced by many factors, and these factors are: number one, tone. It refers to the ongoing contraction and state of muscles at rest. Tone can be normal, hypotonic or hypertonic. Hypotonic or hypertonic. Hypotonic means controlled and hypertonic means extra active, right? So it refers to the ongoing contraction. जो भी मसल्स की मूवमेंट हो रही है, जिस मसल्स की भी, वो क्या करती है, मसल्स में टोन अप क्रिएट करती है, मसल्स को शेप एंड साइज देती है. एंड स्टेट ऑफ द मसल एट रेस्ट, तो उसको टोन करती है. काम करने वाली मसल्स और रेस्ट के टाइम पे मसल्स, उसको इस शेप में नॉर्मलाइज करती है विद द हेल्प ऑफ low intensity exercise or hypertonic kind of activities. Now the strength factor influence motor development. Second point, strength. It refers to the force of a muscles contraction purposefully exerted against resistance to carry out an activity. It develops or it depends on the strength. It refers to force of a muscles contraction forcefully, purposefully exerted against resistance. Whatever the work you are doing, whatever the resistance you are having, whatever the task you are having, to complete that task, when the muscles contract purposefully to exert against that resistance, to carry out that activity, that is called strength. Endurance. It is the ability to maintain the exertion required for an activity. जो एक्सकर्शन है, जो भी काम करने की स्ट्रेंथ है, लंबे टाइम तक काम करने की, उस एबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ दिस मोटर डेवलपमेंट. तो इट इन्फ्लुएंस व्हाट काइंड ऑफ द एंड्योरेंस यू आर हैविंग, व्हाट काइंड ऑफ द स्ट्रेंथ यू आर हैविंग, व्हाट काइंड ऑफ द मसल टोन यू आर हैविंग, इज बेसिकली इन्फ्लुएंस योर मोटर डेवलपमेंट. नाउ मोटर प्लानिंग. It is a complex and often intuitive ability to know how to carry out steps needed to complete physical activities. Complex and often intuitive ability to know how to carry out the step. Motor planning means how to perform a given task. What are the abilities you are needed to complete that physical activity is called motor planning. So that is also influence our motor development. Sensory integration. It is the ability to accurately interpret sensory input from the environment and to produce an appropriate motor response. How your head and hand together responds to a particular given task. That capability called the sensory integration. So these 5 components are the important components which influence. These are the 5 factors which influence the motor development. Right? आज के लिए इतना ही. हाँ जी. Is that okay? Are you happy with this? Yes, sir. कुछ लोग 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए क्लास में आते हैं. ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं. आप कितने बजे क्लास में एंटर हुए और कितने बजे क्लास से बाहर हुए, दिस ऑल गेट रिकॉर्डेड ऑटोमेटिकली इन दिस क्लास. सो आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल द इंटेलिजेंट बॉयज, काइंडली कम ऑन टाइम and leave the class on time. Just remember that.
Okay, so don't show your intelligence. Show your intelligence in the class work. Show your intelligence in participating in the activities. Otherwise, it is very difficult to talk to you people, right? अभी तक किसी से इंटरेक्शन नहीं हुआ. Nobody has opened the window. I don't know you are at the back or not. अभी तक मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूं कि कोई है भी क्लास में या नहीं है. मोहम्मद से बोलना बेकार है. आई हैव गिवन अप. विकास से भी मेरा यही समस्या हो रही है अब. पलक से बोलना बेकार है क्योंकि वो भी विंडो नहीं ओपन करती है. तो ये चीजें जो है ना, ये चीजें समझदारी की नहीं है. सारे टीचर्स के और जितने भी हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं ना, ये रूइंड हो रहे हैं. सारी चीजें आप लोगों के लिए करते हैं, सारे प्रयास कर रहे हैं जो बेस्ट हो सकता है. ठीक है, तो आगे कोशिश करें, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में हम लोग काम करें. हम लोग कभी भी असाइनमेंट्स वगैरह के लिए रिफ्यूज ना करें, क्योंकि वही उसी का तरीका है कि हम टू वे इंटरेक्शन ला सकते हैं. अदरवाइज वन वे कम्युनिकेशन रह जाएगा. आप लोगों की पूछने की आदत है नहीं, और बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, उसका कोई मीनिंग सेंस नहीं रह जाएगा. तो आई वॉन्ट दैट एवरीबॉडी शुड पार्टिसिपेट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? से यस और नो. राइट इट इन द चैट बॉक्स. So next class, Yes, sir. I want that you should volunteer for the presentation. You all have to present, because the presentation is not only helpful in two-way communication, it also helpful for giving you the all opportunity to explore yourself, and you are having the enough time for that. All right? चलो शांति पाठ करते हैं. चलो पाठ शांति पाठ करो. Yes, sir. Oh. Louder. Shanti, Shanti, Shanti. God bless you. You may leave.